and Nina Gill, Zafar Saab, Chaman ji, and today, perhaps first time, we have President of the largest Hindu temple in Europe, Balaji Temple, which is in Tividale, his founder and chairperson, Dr. Rao. Dr. Rao ji, I welcome on behalf of Shri Guru Ravdas Sabha here and whole congregation. And also, a role model amongst us from British Army, Captain Major Singh, who has come in his uniform, and his father was the first Asian to be recruited in British Army after 1947, and he lived in Smedik. And his son, Mukand Singh, he has been working with me very hard to ensure that our youngsters are given opportunity in the British Army. And today, as 450 police officers are being recruited, the only way for us to be part of it, that we must join. Encourage your youngsters to join British Army and also West Midland Police Force. So, on behalf of the whole Sangat, I welcome all of you. And I like to announce that first time in our history, the largest temple, which is Hindu temple in Tividale, please visit Balaji Temple, not far from Oldbury Council House. We will be celebrating Shri Guru Ravdas Ji's birthday there, first time, and we will show the whole world that Guru Ravdas Ji does not belong to one caste or one community, he belongs to the whole world. The whole world can take benefit from his teaching. Shri Guru Ravdas Ji. Saad Sangat Ji, प्रश्न पैदा होता है कि असी आप जी दास नूं आशीर्वाद देंदे हो, कांशी टीवी ते भी हफ्ते विच 2 बारी सत्संग करन दा अवसर मिलता है, और यही बेनती है कि साडे यंगस्टर साडे बच्चे पूछणगे कि असी क्यों गुरपुरब मनाते, और उहदा इक्को ही कारण है, सतगुरां दे गुरपुरब मनाइए, सतगुरां नूं उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना, लेकिन जेड़े मनाते ने उन्होंने जरूर फर्क पेगा। अज जिन्ने भी कदम तुसी चल के आए हो सतगुरां दी हजूरी दे विच, एक एक कदम धार्मिक बाणियां, धार्मिक शास्त्र एक गवाही दिंदे ने कि गुरसिख लाए भावनी एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत हैं। जदों भगत गुरु दा भगत एक कदम गुरु वाल वधांदा है, सतगुरु करोड़ कदम अगे होके उन्होंने रिसीव करते हैं, मिलते हैं। और ये कोई किस्से कहानियां ने, ये जीवन के तजर्बे हैं। इस वास्ते अज असी सारे इकट्ठे होए हाँ, दूर दूर तक लाइनां लगियां पईयां ने, उहदा कारण इक्को है कि सच्चे पातशाह तेरी सिक्ख्या सानू चेते आवे। वी आर हियर टू रिमाइंड टू आवरसेल्व्स द टीचिंग्स आप श्री गुरु रविदास जी महाराज की उन्होंने सिक्ख्या दी सी। और साध संगत, ये मानुष जन्म दुर्लभ है, असी रोज सुनते हाँ और असी अपने चारे पासे भी देख सकते हाँ। कदे मझां दे गुरुद्वारे नहीं, कदे गाइयां दे मंदिर नहीं, कदे सप्पां दे उन्हां दी पूजा नहीं हुंदी, केवल बंदियां वास्ते बने हैं मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चिज, मस्जिद, क्योंकि इंसानी जन्म के विच ही केवल यही जन्म है कि 84 लाख जून उपाई मानुष को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर झुके आए जाए दुख पाएंदा, केवल इस जन्म विच ही असी अपने मानुष जन्म के मकसद की प्राप्ति कर सकते हैं। और मकसद एक ही है, सतगुरां ने फरमाया है, हरी रूपी हीरे की प्राप्ति करनी है, हर से हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनार दो दुख जाएंगे सत पाखे रविदास। इस वास्ते और नाल ही नाल असी सारे ने पड़चोलना है, जो मत्था टेकते हाँ इत्थे अपने अंदर झाती मारनी है कि साहिबा ने भी कहा है कि अंतरगत राचे नहीं बाहर कथे उदास, तेनार दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास।
उपरों उपरों कोई बंदा भी भगत नहीं बन सकता। किसी वेशभूषा का नाम भगती नहीं है। भगती है वो जीवन का, उस आचरण का। और अज असी ये अरदास लैके आए हैं, सतगुरु एक एक बच्चे के सिर ते हथ रखन ताकि साडा आचरण ऐसा बन जाए, साडे घरां दे विच सुख शांति होवे, साडा घर चार दीवारी दास क्या करता है बेगमपुर बन जान, जिथे कोई गम ना होए, जिथे कोई झगड़ा ना होए, जिथे कोई तू तू मैं ना होए, जिथे कोई हिंदू सिख मुसलमान ईसाई खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य का भिन्न भेद न रहे, जिथे केवल ते केवल जात जन्म ना पूछिए, सच कर ले बताए, तेहा जात तेहा पात है जेहे कर्म कमाए। सतगुरां ने फरमाया सी 637 वरे पहला कि बंदे की जात जन्म नाल नहीं हुंदी, बंदे की जात जिहो जिहा आचरण है उस नाल हुंदी है। चाहे वो असी सतगुरु कबीर जी की बाणी पढ़िए, चाहे वो किसी होर गुरु महाराज की बाणी पढ़िए, सारिया बाणियां ने सतगुरु रविदास जी की बाणी ते ही मोहर लगाई है। मोहर लगाई है कि जो उन्होंने हुक्मनामे किए हैं, जो उन्होंने एक एक शब्द किया है वो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक ओसी भी सच है। अज बने हुए कानून उन्होंने वखरा किया जा सकता है, वो बदले जा सकते हैं, लेकिन 637 साल पहला का बनया हुआ कानून उन्होंने दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। उन्होंने अज भी उस तरह मत्थे चुकते हैं जिस तरह उसले चुकते सन। इस वास्ते साध संगत दास बहुता समा ना लेंदा होया, क्योंकि होर मेरे वीर भराई आए ने तो मैं तो कल फिर कांशी टीवी ते घंटा ला लेना। इस वास्ते मैं सिर्फ यही अरदास करता हाँ, हे मेरे सतगुरु आज जिन्ने भी बच्चे चल चल के आए ने और जेड़े नहीं आ सके उन्हों की भी हाजिरी लगाना और सारिਆਂ ਦੇ सिर ते हथ रखना कि जवाब जी की पावन अमृत बाणी और जवाब जी के उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शामिल हैं। इन्हां दे उत्ते असी चल सकीए, अपना जीवन इहो जिहा बना सकीए और नेक कमाई करिए। नेक कमाई जो करे ग्रह तज बन ना जाए, रविदास प्यारा राम राय घर ही बैठे आए। एक करके देखिए नेक कमाई सतगुरु नूं अंग संग समझ के अकाल पुरख ईश्वर हरि नूं जान के इसकी जदों भगती करने आ करके देखो, ये जीवन अपना भी सफला होएगा, साडे पड़ोसियों का भी सफला होएगा। हर बंदा कहेगा कि वाकई सतगुरु रविदास जी को मनन वाले, उन्होंने बाणी ते चलन वाले वो बिल्कुल सच कहते हैं, जिहड़ा कदे भी दुनिया तो मिटाया नहीं जा सकता। सो साध संगत दास कोई अरदास करता है कि सच्चे पातशाह for a couple of minutes if I may share that all these leaders, policy makers, they want to make our life easy and happy and they work very hard. But can I share this? In spite of all this new progression, IT, internet, everything we have in our homes, but where that humanity have lost, where those basic virtues of humanism वो किथे गए ने, उन्होंने खोजना है। Every child, every person have couple of telephones in his pocket, but he has no time to say hello to his mother, no time to say hello to his father and grandparents। अपने दादी दादे नूं hello करने वास्ते आज बच्चों को टाइम ही नहीं रहा। इस वास्ते वो साडी जेबां च इंटरनेट भी होवे, साडियां जेबां च सब कुछ होवे, लेकिन नाल ही नाल वो जिहड़े गुण सानू सतगुरां ने बख्शे ने वो असी नहीं गोचन देने, उन्होंने दूर नहीं होने देना। यही अरदास है और दास ये अरदास करता है, सच्चे पातशाह अज कृपा कर ये जितने भगत आए ने इन्हां दे घरां विच सुख शांति भी होवे, इन्हां दे घरां विच कदे कोई तकलीफ ना आए, पर नाल ही नाल भी मेहर करी वो जिहड़े निमरता मिठत मिठास स्वीट लैंग्वेज ह्यूमिलिटी टॉलरेंस ये जिहड़े गुण ने ये गुण केवल ते केवल सतगुरु के पासों प्राप्त होंदे ने, होर कितों हो नहीं सकते। इन्हां शब्दों के नाल ही दास खिमा दा जाचक है। कोई शब्द ऐसा जुबान तो निकल गया होए, मैं क्या करना बोलने लग्या दो बारी सोचना चाहिए। जिस तरह जिहड़ी टूथपेस्ट हुंदी है एक बारी ट्यूब चो निकल जाए तो वापस नहीं पाई जा सकती,
इस तरह बोलन लग्या बाशक जी 2 बारी सोचा करो 3 बारी जिन्ना चिर बोल तुहाडे अंदर ने वो तुहाडे जे लेकिन जदों बाहर आ गए फिर वो दुनिया दे हो जाते हैं। इस वास्ते दास पासों कोई भुल चुक भी होए क्षमा करना और आप जी नूं सारी साध संगत नूं सतगुरां दे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। चौबले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। Okay. Our next dignitary is, I'm going to call him Uncle Abashik Ji from the Narankari Mission Center. He's the councillor for the Lozels and East Hansel ward, which is the ward that our Bhavan is situated in. Councillor Wazim Zafar. Jai Gurudev, good afternoon to you all. Can I first and foremost thank the Management Committee, the President, the General Secretary, my dear friend Rajinder Ratu, the staff and volunteers at this amazing faith institution for inviting me and some of my colleagues to address you. I feel honoured and privileged that this Bhavan is based here in my ward, the Lazals and East Hansel ward, and all those visiting from outside the ward, including our dear friend, the Police and Crime Commissioner, and Nina Gill, our forthcoming member of European Parliament. I'd like to wish them a warm welcome along with others. I'd also like to take this opportunity to congratulate each and every one of you on the 637th birthday of Shri Guru Ravidas Ji's. I entered politics under the platform of the Labour Party because I wanted to create a fairer society, a more equal society, and a society where social justice was at the heart of it. These are the same principles of Shri Guru Ravidas Ji and your community. So I think we, as a Labour Party, we as elected members here can very comprehensively align ourselves with you and stand shoulder to shoulder with you. I'd also like to take this opportunity to thank each and every one of you associated with this institution for the amazing work you're doing in the community, some of the charitable work you've done, some of the donations you've made to the homeless and vulnerable within our society is second to none, and I hope that you will continue to support these charitable causes in the future. Once again, thank you to the President and the General Secretary, Rajinder Ratu. Rajinder's a dear friend who's been doing some excellent work in the community for many, many years, much longer than I've been around in the community, and I want to take this opportunity to pay tribute to him and his entire team. Thank you. सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ VIP ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਰਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ VIP जो इंट्रोड्यूस करा। जय गुरुदेव। First and foremost, Jai Gurudev to all the congregation, all the worshippers and all the family, because despite all our differences, we are a family. So today we are celebrating the 637th birth anniversary of Shri Guru Ravidas Ji. A special occasion, a holy and righteous occasion, an occasion for unity, an occasion for remembering what our Guruji stood for and still stands for. He was around at a time when caste discrimination was rife. He was at the forefront of demanding human rights, dignity and respect. And all these years later, we still appreciate what he had to offer. So today we have invited various dignitaries from various faiths and backgrounds to celebrate with us our Guruji.
We've had apologies, unfortunately, from a few representatives, and I'll just quickly go through that, and then we'll get our dignitaries each to say a few words in sequence. Okay, so the apologies are first and foremost from the Right Honourable Mr. David Cameron, the High Commissioner of India, His Excellency Ranjan Mathai, the Lord Mayor of Birmingham, Mike Leddy, the Deputy Lord Mayor, Councillor John Lyons, the Leader of Birmingham City Council, Sir Albert Orr, the Leader of the Conservative Group, Lord Whitby for Birmingham City Council, our Chief Superintendent from West Midlands Police, Emma Barnett, and our Member of Parliament for Birmingham Perry Bar, Khalid Mahmood, and also our Member of Parliament for Birmingham Ladywood, Shabana Mahmood. Unfortunately, they could not join us here today, but they do send their apologies and best wishes as well to the Ravidasia community. So, without further ado, I'm going to ask our Police and Crime Commissioner, Shri Bob Jones, to please address the congregation. Jai Gurudev, I'm honoured to be here on the 637th anniversary and birthday celebrations of Sri Guru Ravidas Ji. It's an honour to be here because in my role of Police and Crime Commissioner, it isn't just about having a police officer on every corner. It's not about policing the community, it's about policing with the community. And those that follow the teachings of Sri Guru Ravidas Ji are some of the greatest examples of why that partnership with the community is extremely effective. And I'm honoured to come across many of the representatives of your community who are there at the forefront of leading to make our communities a much safer place. There are many active members of your community, but none more so than the person who just spoke before me, your General Secretary, Raj Ratu. He has been most recently showing leadership on the Knives campaign, and without his contributions and leadership, I think the issues like the knife bins would not have actually happened. And I would also commend him on his national involvement in achieving the legislation in respect of the anti-caste legislation. I think it's a major achievement to get it on the statute book. It is just regrettable for some reason that the legislation is not yet implemented, and I hope we'll see that implemented as quickly as possible to ensure that many of the teachings of Sri Guru Ravidas Ji in terms of justice, equality, fairness can actually be brought to bear in our own local community. Can I also add that in terms of possibilities to even extend your community's involvement in community safety, in policing, I have just announced the recruitment of 450 new police posts over the next 2 years. Given the traditions of the Ravidasia community, given the teachings of Sri Guru Ravidas Ji, then I would hope that many members of your community would be interested in applying, because they would be a real asset to the West Midlands Police Force, and I would encourage particularly the younger members, both men and women, to very much look at that opportunity. Our police force needs your commitment, needs your experience, needs your understanding of the community, and I would very much encourage you to please apply. So thank you again for inviting me. It's an absolute honour to attend, and hopefully in honour of the teachings, let us hope we see the anti-caste discrimination legislation implemented as quickly as possible. Yeah, sure. Thank you, Bob. I'm just going to get the President, Shri Avtar Singh, here to present you with a Guest of Honour trophy. Just go, if you just go to the front. Yes, look this way.
Okay, our next invited dignitary is somebody you should know fairly well, actually Nina Gill, and she was a member of the European Parliament, and once again she is standing for a West Midlands seat. So I'm going to ask Shri Nina Gill to please address the congregation. जय गुरुदेव जी मैनू बहुत खुशी है कि मैनू आज मैनेजमेंट कमेटी ने मौका दिता है थोड़े दर्शन करने दी ते आप सारे मिल के एक बारी गुरु जी के जन्मदिन की सारे रल के कहिए जय गुरुदेव जी। सो मैं पहला सब तो ना रजिंदर रातू हुणा दा बहुत धन्यवाद करती हैं क्योंकि इन्होंने कम्यूनिटी नू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे किया हैगा सारे जिहड़े इशूज़ है अपनी कम्यूनिटी के है तो बहुत खुशी है कि अपना जिहड़ा पुलिस कमिश्नर पहला बोले सीगे बॉब जोन्स उन्होंने कहा सीगा भी हुण वो रिक्रूटमेंट करते हैं तो इसलिए आपां नू जे अपनी कोई प्रॉब्लम्स है पुलिस वगैरह दे नाल अपनू जरूरी है कि अपने बच्चे उन्हां विच जाण तो इस करके आह मैसेज जरूर अगे पहुँचे। तो होर भी मैनू बहुत मान हैगा कि अपने इत्थे काउंसलर्स आए हुए हैगे आ काउंसलर वसीम जफर ते काउंसलर चमन लाल जी दोनों जाने मेरे नाल काम करते रहे हैगे आ जो मैं 10 साल इत्थे MEP रही सीगी ते हुण भी मैं उम्मीद करती हाँ कि जो नैक्सट इलैक्शन होनी है मई दे विच ते उन्हां दे नाल साथ साथ जिहड़ियां अपने इशूज़ हैगियां इत्थों पाबंदियां इशूज़ हैगे आ होर जिहड़े डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है दी इशूज़ हैगे आ भी वो असी उन्होंने एलिमिनेट करिए। मैं यूरोपीयन पार्लीमेंट जो पहला सी उत्थे भी मैं जिहड़े कास्ट ते एंटी डिस्क्रिमिनेशन इशूज़ बहुत अगे होके खड़ी हुई सी तो मैं जे थोड़ी कृपा दे नाल फिर इलैक्ट हो जावां मैं वो जिहड़े इशू जिवें रजिंदर हुणा ने मेरे नाल कहे हैगे आ भी जिहड़ी इत्थे डिस्क्रिमिनेशन दी हैगी आ वो सानू जरूर असी घट करिए क्योंकि जे आपां याद रखिए कि जिहड़े गुरु जी ने की कहा सीगा गुरु जी ने कहा सीगा भी तुसी ऑक्यूपेशन नहीं देखनी हैगी आ भी सारे बंदे इक्वल स्टेटस दे हैगे आ ते ओह आपां मैसेज ना सारे अपने बच्चों नूं सिखाना हैगा ते जे अगे भी स्कूलों सिखाना हैगा ते जिहड़ा लैजिस्लेशन हैगा वो प्रॉपरली उन्होंने इंप्लीमेंट करना हैगा। ते मैनू बहुत ऑनर हैगी है कि मैनू अज मैनेजमेंट कमेटी ने आह 2 मिनट थोड़ू आह लफज कहने का मौका दिता हैगा ते जे मेरी पंजाबी च कोई भुल हो गई होवे मैं थोड़ी माफ़ मंगदी हाँ। एक बारी फिर सबनू बहुत बहुत बधाई गुरु जी के जन्मदिन की। जय गुरुदेव।
अपनी धरती प्रवान कर कोई किसी भी श्रद्धा भावना लेके सतगुरु के चरणों में दरबार में पहुंचा है सतगुरु दियां थैंक यू बल जाओ रमैया।